हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ विकी और मेरे साथ एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स जिन्हें आप जानते हो एज मास्टर शेफ, एज मिशेलिन स्टार शेफ, एज एन ऑथर, एज अ philanthropist. But do you know he is the first author, the first Indian chef जिनकी बुक Sacred Foods of India की NFT बिकी है for $50,000. And I must start this interview with congratulating you, Vikas ji. It's always a pleasure and welcome to Dubai. Likewise, Vicky. You've always been the first first introduction to Dubai for me. आज कितने मेरे ख्याल आठ साल हो गए मेरे को. Easily, yeah. For 8 साल से you have always been the first, one of the first people I message when I'm coming to Dubai. Okay, Vicky, we figure out, let's meet. Yeah, and that's the rapport we share. And जब भी मैं मिलता हूँ आपसे तो ऐसा होता है कि आपके अंदर एक और टैलेंट जो है ना वो बढ़ते जाता है. अब जैसे लास्ट टाइम मिले थे तो मिशेलिन स्टार शेफ इंट्रोड्यूस करता था, बट अब वो एक ऐसा लेवल आ गया है कि लास्ट कलर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर, एंड नाउ यू हैव एंटर्ड द स्पेस ऑफ क्रिप्टो. हाउ क्रिप्टिक इज इट फॉर यू नाउ? आई थिंक मैं तो स्पेस एंटर नहीं करता इतनी. मैं तो काफ़ी एक्चुअली देखा जाए तो मैं काफ़ी लेजी हूँ. बट इट्स जस्ट द पीपल कीप पुशिंग यू. पीपल कीप सेइंग दैट राइट नाउ यू हैव द वॉइस, यू हैव international media around you. You should be able to get more of India to the world. And I totally agree on one thing, sometimes to be the first you also get the beating a lot. एक आप पहले हो, आप नहीं सक्सेसफुल हो तो मार पड़ती है. बट आप जब पहले हो तो आपने दरवाजा भी खोला तो you never know कि पीछे से कितनी बड़ी लाइन एंटर करती है. Nice, inspire किया आपने कितने. It's not just Indian chefs. So you're talking about international artists. So many artists. You thought, oh my God, he can keep moving between new careers, new ideas. कि अभी क्या आ रहा है जी, अभी document. And I remember Gordon Ramsay once told me that every time I see a new Instagram post from you, I don't know कौन सा new world enter कर रहा है और कितनी देर तक लगा रहेगा. Exactly. I think so sometimes we fail badly and then we quickly move on, because that I've learned that failure is going to be part of life, especially when you're doing such entering new worlds. Absolutely, you're exploring unknown worlds as well. Yeah. एक खास बात आपकी क्या लगती है कि आप US गए थे, Indian cuisine world famous करने के लिए, but now what you're doing is you are trying to help the whole world in different ways, different causes. अब पैंडेमिक के दौरान फीड इंडिया कैंपेन US में बैठ के आपने क्या, it is nothing less than magical जो आपने किया. एंड नाउ जो आप विडोज के लिए कर रहे, एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है यूएस में. आई मीन इट्स सच अ बिग स्टेप. तो समहाउ आपको लग रहा है कि जो मकसद के लिए आप गए थे यूएस और अब जो चीज़ें आप कर रहे हैं, आई मीन इट्स. देखिए, मुझे लगता है खाना ने मुझे आवाज़ दी कि आई कुड एंटर टेरिटरीज जो मुश्किल थी इंडियन शेफ्स के लिए यूएस में. एंड आई फील टू हैव सच अ अमेजिंग करियर रन. पर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ पिक्चर बाकी है. एंड आई डू फील, आई डू हैव आई डोंट अपोलोजाइज, बट आई डू हैव अ फीलिंग फॉर पीपल हु कीप telling me that why would you do this? You have for people to be one time to achieve a Michelin star, they feel कि मेरा अब मेरी लाइफ का मकसद हो गया. And now it's time to literally to sit on the laurel, right? But I feel to be having a continuous record of so many things, that there must be a reason that God chose you. From the place we come from to the city we are in and the position we are holding, it's difficult. Sometimes you bare your soul. मुझे लगता है कभी कभी होता है मेरे साथ कि कोई कॉजेज, जैसे विडोज का कॉज आज 11 साल हो चुके हैं. लोगों को लगता है हम सीधा पहुंच के कैपिटल हिल और कांग्रेस में 11 साल से मैं लड़ रहा हूँ इसके लिए. In terms of short stories, movies, novels, so much of feed about them, so much of talking about that. The stigma around the widows is not just a problem in some parts of India. It's a very major problem even in Africa. And if this resolution gets passed, it affects 350 million widows. 350 million widows को affect करता है. The word vidva is, comes from Sanskrit, which means, bichari kind of, the whole feeling. I think you should be able to use your voice, and you do the same thing. You do the same thing. You have a platform. You always try to push new agendas for people, to make them understand and be heard. I mean, जो लेवल पे हम करते हैं और जो लेवल पे आप, I mean, that's your humility. I've always noticed that, कि आप
अमेरिका में भी थे या अभी भी है तो आपका एक्सेंट नहीं बदला, ये क्यों हुआ? ये आपका रूट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? Just to let you know, Vicky, I can speak with American accent very clearly. Amazing, yeah, this is I can, amazing. but because अब काम जिस करते तरह के थे, लोग सामने आपके मिलते हैं नहीं, मैं नहीं बदलता. अब मैंने सोचा नहीं बदलता. पहले मैं बहुत आई थिंक इनसिक्योरिटीज भी होती हैं लाइफ में, मैं कभी नहीं बोलूँगा. तो हम फटाफट कहते हैं कि हमको एक्सेप्ट कर लो जी, हमारा एक्सेंट भी आपके जैसे है, हम भी आपके जैसे लगते हैं, हम भी आपके. So I felt I'm amazing by just the way I am. And I'm not going to let anybody tell me that I look inferior to them or my complexion is not great or my. मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे को इतना बड़ा पोर्टफोलियो दिखा दो फिर सब लोग. आप 24 घंटे मुझे बोलते रहते हो कि तू बहुत इन्फीरियर है, तू बोलता नहीं ठीक, तो तेरा खाना बहुत इन्फीरियर है. I'm like, do something. Then do something what I do. So do one part of it. It's not out of arrogance. It's out of. अब बहुत देर किसी को धक्का मारते रहो ना, आपको पता नहीं वो इंसान आप दफना रहे हो, वो और स्ट्रांग भी हो रहा है साथ में. Because that person is resisting. There's this quote, right? वो कहते हैं कि आप जितना दफनाओगे वो उतना ही फूल बन के. Yeah, beautiful it is. And I think that, you know, with all honesty, I want you to answer this next question. I'm sure, मतलब आपने बैरक ओबामा से लेके दलाई लामा तक के लिए खाना बनाया है. With all honesty, you have to tell me this. Plum Khanna, आपका नया inclusion in your family. I never got a chance to congratulate on that. क्या प्लम को आपने अपने हाथों से बना के कुछ ऐसे खिलाया है? प्लम देख लो जी मेरा. Oh, he's your screen saver. This is so cool. My sister chose him. And he was my sister's biggest happiness till the last day. Biggest happiness of my sister. 24 घंटे उठती वीडियो दिखा क्या कर रहा है वो. And he's also very naughty. So True. I think Plum को ठीक है. Plum का rules के साथ I created a brand because of what I was cooking for Plum, because he loves berries and he loves chicken. Wow. And he loves egg. तो फिर मैंने सब कुछ कंबाइन करके क्रिएटेड अ होल फूड फॉर डॉग्स ड्रूल्स के साथ पार्टनरशिप में. एंड ही इज ओके, ही इज इन अ हॉस्टल राइट नाउ. 2 दिन और हॉस्टल में है. Yeah, right. And the thing is, of course, you are missing him a lot, but there's one person in your life which you've missed, I think, since the time, you know, we've got to know. And जब मुझे भी पता चला तो, you know, even I was little shocked, you know, कि but all prayers coming in from around the world. और हर जगह जो है इतना प्यार आपको मिला है. टॉक अबाउट राधा और द लॉस, यू नो, इट्स इररिपेरेबल. लेकिन हाउ आर यू कोपिंग अप विद इट? आपको टाइम मिला टू ग्रीव? और आप इतने बिजी होते हैं इतने काम में, डिड यू गेट टाइम टू, यू नो, ग्रीव? Mama was with me and we lost her physically, and that time it shock to tha, but Mama is also like a shock absorber for me. And then I went to India for her, all the final wishes, what I did to her, all the final things. And then I came back to America, and that time it hit me because ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं है, कोई ऐसी शॉप नहीं है, कोई ऐसी खाने की रेस्टोरेंट की जगह नहीं है, कोई ऐसी मूवी नहीं है जो हमने साथ नहीं देखी थी. You know, so for me, every single day of thinking of her, and but I have to keep myself strong because I understand that a lot of people watching me, and I also have to keep strong to move forward for myself, for my mom, for family. And of course, this is irreplaceable loss. And sisters bring out a different kind of anger in you. So irritating. So irritating. कि मन करता है कि मारो, हाँ, थप्पड़ी मार दूं मैं, लेकिन नहीं होता है. नहीं मारा. मैंने बहुत मार खाई है उससे. अच्छा, खाई है आपने? मेरे दांत उसने तोड़े थे बीच में. मेरे को मारा था बेड पे. Really? हाँ, मुझे मारा था और मेरी थप्पड़ मार दी थी मेरे को. मुझे she used to slap me, you know, easily. But what sisters do for you, nobody does for you also. She could fight the whole world for me, and I know that. And she's watching over me and protecting me. I put a picture right in the front of the door. She said she'll always protect me. And I put the picture that she always is there to protect. And I hope she's happy with Papa. I can feel it. Absolutely, yeah. In fact, you know, जब ये हुआ था तो you got a lot of emails, lot of, you know, love पूरी दुनिया से. I mean, if you could just tell us a little bit about it, जो हमें उतना नहीं पता होगा, because you must have got all this. So I was totally off everything, emails and all. But जब मैंने check करना शुरू किया, I was, I think, after Amritsar we went to Varanasi, Delhi, all the wishes she had, and
Then after Delhi, I started reading my emails. We had more than 4,000 emails about people writing from all over the world. We are your sister. We are your sister. Imagine the people who took the effort to write it and Correct. to draft something Correct. so beautiful, poetry and everything, and pictures and paintings. And I think that's the power which keeps me going also. I'll be honest with you. Superb. Yeah, let's move on with last color. Again, बहुत सारे आपको applaud और accolades भी मिले internationally as well. Unbelievable, right? Unbelievable. Last color के लिए नीना गुप्ता जी, fabulous actress, and क्या performance उनका है, वो लड़की भी as well, beautiful. Now, where do you see last color जब आप बना रहे थे और अब जो kind of applause मिला है? So last color was made out of pure love, and it was, they say, universe makes you do all these things. And Neena Gupta ko leke aana movie mein, she's the top and one of the very respected actresses of India, and we got her, and the movie did very well international circuits. We had more than 60 film festivals, and we won award in almost everyone. Yeah. After some time I stopped going to the festivals. Like, bhaiya mujhe restaurants bhi chalane hain. It was like True. But it was amazing, and the biggest achievement for the movie was, of course, we were eligible for 2020 Oscars for Best Feature Film. But imagine that first movie getting that round of applause. Exactly. When people, I'll tell you something honestly, Vicky. When you run restaurants, you get emails from people saying that we want to be chefs. But the moment you made a movie, from bankers, from accountants, from people who regular jobs, from chefs who said, we have a story. How did you make a movie and you were always hiding it under the table? और इतने साल बनाने के बाद सीधा मूवी बाहर आ गई. And I think the biggest achievement for the movie is not inspiring people that they have the capacity to tell stories. For me, it is that you have to be willing to take a risk. I'm 50 plus and I'm still always reinventing and doing new stuff. But the biggest achievement of the movie was when it was shown at the United Nations with standing applause, which also became one step closer to getting to the Congress to pass a legislation about non-discrimination, empowerment of widows. It will be easier for us to get funding secured for them. And once it's in the Congress, there's so many more steps and doors which open for many foundations who work for widows. Because widows were not a part of human rights mandate. They just got it acknowledged at the UN just a few months back. Wow. So a global fund for widows, which is run by Heather and me, are like totally brother sisters, and we have to knock this out. And we have to win in this, not just for कि हमने किया नहीं, बार करेंगे till we get the right ears to listen to us. And I feel it's okay to do things on grassroots level, but when you can change the law from top, people know that they have laws and they have rights. Exactly, and the way you're going forward with it, तो पूरा power आपके साथ. Can you imagine? Yeah. Can you imagine? I can't. पहली बार मिले थे पता था ये life is going to unfold like this. Exactly, that's what I've been saying, that कि हर बार जब मैं मिलता हूँ तो आपके अंदर ऐसे talent skills निकलते हैं बाहर कि I myself get inspired. I'm sure the world is getting inspired, but the best part is कि अब लग रहा है कि आप गए क्यों थे US. अब लग रहा है, अब meaning पता चल रही है, and the way it's unfolding, Absolutely. The universe has its own ways to tell things to us. I feel that कि हमारे हाथ में नहीं है, सृष्टि के हाथ में ज़्यादा है. आपको ऐसे रास्ते पे डाल देते हैं, ऐसे दरवाजे बंद करते हैं आपके लिए, ऐसे लोग मिलाते हैं आपको, for good or for bad. ये विकास खन्ना बात कर रहे हैं या दलाई लामा कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ. And I feel कि सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत बार दरवाजे बंद मिलते हैं लोगों को, and people who are listening to this and watching it, and for them also there's a reason the door is closed for you. There's a much bigger gateway opening for you. But there's one condition, you got to keep going. Absolutely, keep going, because the society also एक तरह से आपको support करते हैं, help करते हैं, and the kind of love that you've got जब आपने अपने घर वालों को your family member आपने when you lost someone close to you, but a lot of people lost a lot of closed ones अपने बहुत ही pandemic के दौरान. उनके लिए कोई message अगर आप देना चाहते हैं तो how to cope with that? I don't know what to tell somebody. I'm myself a broken brother right now, but I do feel that they don't go anywhere. They become closer to us, and there's a brother-sister love is so much of
every childhood memory. Absolutely. And you know, her favorite actress was Madhuri. And वो सारा बचपन इकट्ठे बीता है उससे same Madhuri movies. came here Yeah, but you know, recently. Madhuri used to send her messages when she was in the hospital that Radha, you got to get well soon. I'm coming to New York. We're gonna have time together. You got to be strong. And she used to, she'll be nodding, and I know. Correct. So I used to get all the favorite people of hers calling them, can you send messages for her? Because and please don't disclose it to anyone because she's gonna be okay. And I thought that was a battle I could win, but you can never win from God. But it was amazing that to have so much of love and support around you. You know, you never felt isolated. You never felt you're disconnected. कभी नहीं लगा मेरे को, कभी भी नहीं लगता. इनफैक्ट यू नो जब भी आप दुबई आते हैं तो एक अलग कनेक्शन आप बिल्ड करते हैं विद द एंटायर मीडिया वर्ल्ड ऑफ कोर्स बट ऑल द पीपल हु लव यू एज वेल क्योंकि जैसे ही आप एक मैग्नेट की तरह हो आप जैसे ही आते हो कि लोग ऐसे आते हैं आपके पास मिलने के लिए और यू नो कल का आपका लॉन्च Sacred Foods of इट्स India. ऑल ओवर द यू नो सोशल मीडिया न्यूज़पेपर्स रेडियो हर जगह पर है प्लीज टेल अस अबाउट सेक्रेड फूड ऑफ इंडिया It's my 38th book. यहाँ तक पहुँच के सोचा अब नहीं किधर था। जाएं पर सोचा नहीं था मैंने बिल्कुल भी यहाँ तक पहुँच सकेंगे बट यू नो बुक तो 2014 में सबमिट की थी मैंने लाइक द होल प्रपोजल एंड एवरीथिंग So if you could take a look at the book as well. एब्सोल्युटली थैंक यू पकड़ उठा के देख तो मेरा मकसद ये था कि जब कोई उठाए किताब को उसको लगे अपनी छोटी सी बेटी को उठा रहा है So ये आप यूएस से लेकर आए अपने बैगेज में अलाउड था नहीं ये तो यहाँ से आया सेवा काशी में बन रही है ये दिस ऑल हैंडमेड और ये जो रेसिपीज हैं मंदिर से गुरुद्वारा दरगाह मॉनेस्ट्रीज मदर टेरेसा किचन्स टू सिनेगॉग्स हिंदुस्तान में हर जगह पे कोई ना कोई तरह का खाना बनता है जो बांटा जाता है सब में एंड आई फील दैट इज नेसेसरी टू हाईलाइट दैट एंड टू सेलिब्रेट दैट एंड टू ग्लोरीफाई दैट एंड टू ऑनर दैट उसके लिए ही इतनी बड़ी ये किताब लिखी गई ब्यूटीफुल दैट्स द बुक मार्क एंड यू नो बहुत पुरानी किताबें कभी देखी होंगी हमने उनमें ही ऐसी गोल्ड गिल्डिंग्स वगैरह होती हैं सारी ऐसी राइट महाराजा के टाइम पे So I wanted to bring that tradition of holding the book together. That's why it's not just a digital content, it's a phygital content. It's physical and it is digital. Beautiful. These are all jewels on top. And what happens is that this is a chip. So imagine, everybody says कि normal cookbook कर ले. मैं कहता हूँ we have to move with time. And you know, I'm going to say something which many people will connect to that you know, we are people who are living in diaspora, right? हम हिंदुस्तानी हैं पर हम विदेशी भी हैं, right? तो क्या है कि हमारे बच्चों के पास वो लिंक नहीं बनेगा इंडिया का बराबर वो कल्चर पास ऑन करना है वो continuity is what makes a culture, right? Correct. Continuity of generations after generation. So मुझे लगा कि मैं जब बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ nothing against it, they are totally Americanized. तो मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए घर में जो कहीं ना कहीं उनको इंडिया दिखता रहे और चीज़ भी ऐसी हो कि लगे कि यार कभी कोई और किताब इसके साथ मैच नहीं किया. Correct. So I wanted to go overboard and reach out to those children who will be seeing it in digital form also. Right. And this is the NFT chip where you can scan and you see the whole book and you can interact with the book three-dimensionally. And then you see the beauty of this. Wow. So this is the word Ashirwad, Hindustan की अनेक भाषाओं में. And you just hold the paper and you'll say, what is this? Oh, amazing. It's a lifetime guarantee. Really? Lifetime. So of course the book is dedicated to Ma Annapurna, the goddess of all. And हमारे जो नरिशमेंट के लिए हमारी अन्नदाता सब कुछ यही है. सो आई फील दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट वैल्यूज फॉर चिल्ड्रन एंड देन व्हाट वी डू इज वी टॉक अबाउट कि क्यों हिंदुस्तान सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ पे इतना ज़्यादा खाना टनों के हिसाब से रोज़ मिलता है बांटने के लिए. सो आई थिंक वो मेरे लिए ज़रूरी था हाईलाइट करना उसको कि ये कोई रेस्टोरेंट कुकिंग नहीं है, ये कोई वो कुकिंग नहीं है. दिस इज समथिंग विच इज हायर देन ऑल ऑफ अस. बट यू सी द डेलिकेसी, हाउ डिटेल वर्क is on a very different level. And then the moment you enter this, we divide the book in east, west, north, south. Nice. So we start the book from Kheer Bhavani Mandir in Kashmir, and we say that you know the significance of the place, and then the dish. और डिश वहाँ पे क्यों बनाई जाती है, सदियों से बनती आ रही है, and then the recipe of the dish. And you know, I'll be honest,
उन डिशेस की रेसिपीज तो कोई नहीं बना सकता। जो वहाँ बनाते हैं उनके पास भावनाएं हैं, उनके पास एक सेवा है, लगता है ना, सेवा है उनके पास, एक डिफरेंट है। पर थिंग इज कि मुझे लगा कि हमको इनको ऑनर करने के लिए हमको चाहते हैं कि लोग भी अपने घरों में ट्राई करें। वैसे नहीं बनेगी पर एटलीस्ट उनके घर में भी एक प्रसाद बनेगा एक डिफरेंट तरह का। एग्जैक्टली So, उसके ऊपर ही बुक की सारी डिटेल्स बेस्ड है। एंड आई फील दैट इफ यू लुक एट द ब्यूटी के कहाँ से सामान ढूंढा हमने। I can imagine कि क्या मेहनत गया है इसमें। And this is not एक साल का काम, this is your lifetime. But also इसको डिज़ाइन करवाना, ये सब कुछ करना और इतने बड़े स्केल पे इसको लेके आना। बट एक और बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ कि बिकॉज आई वांट पीपल टू बी यूजिंग दिस बुक, तो हमने कहा कि चलो एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। We want the book to be very sacred, so packaging is like an apple. Correct. It's a must for us. Oh, Created a whole stand so that when you're looking at a book like this, you want to read it, you put it on the stand and then you read. Amazing. Detailed work and also, benchmark. In fact, this suddenly transports me to one of the holy places in India. तिरुपति, वहाँ की लड्डू जो है ना, उसकी रेसिपी मेरे मन की बात। वैसा बन ही नहीं सकता, वैसा नहीं बन ही नहीं सकता। And I have a blessing and a curse of oversensitive sense of smell. और मैं बना रहा हूँ, रेप्लिकेट की हमने रेसिपी, फिर हमने पहले तो we were testing everything in Bombay, फिर मैंने कहा न्यूयॉर्क में we should test the recipes one time because we have a big NRI base. तो रेसिपी टेस्ट की और खा रहे हैं और मैं कहा ना वो स्मेल है, ना वो इंग्रेडिएंट्स भी कहाँ से लेके आओगे वो। ट्रू वो इंग्रेडिएंट्स, ना वो चीनी मिलनी है, ना वो बेसन मिलना है, ना वो आटा मिलना है कहीं पे हमें। सो इवन जाता है यहाँ से, इट्स स्टिल ओल्ड, अब वो इमोशंस कहाँ से लाओ। बट आई नो दैट लास्ट टाइम जब मैं किनारा आया था तो आपने मुझे एक ऐसी डेजर्ट खिलाई थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज थे ऑफ कृष्णा मठ इन उडुपी, राइट। और वो जो आपने क्रिएट किया था, आई मीन you have that power to do it, right? नहीं है इतना ऑनेस्ट भी मत बनो। नहीं है, एक असली गुलाब को आप कैसे कंपेयर करोगे एक प्लास्टिक के फूल के साथ। These people are real roses, I'm not glorifying this because मैं भी यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ मेरी बेस्ड है इसके ऊपर। मैं पॉसिबल नहीं है, these are commercial kitchens, जहाँ पे लोग काम कर, पर आवर है हमारा, सब कुछ बिक like सेल पे है in a way, and that's nothing is wrong with that, that's a different cooking, but इनके साथ नहीं कंपेयर कर सकते। This is very high elevated, this is bhakti. Yeah, but आप इतना मन से ये चीज़ आप कह रहे हैं और बोल रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अगर घर पे कोई ट्राई भी करता है, they will not be able to even come close to it. To try it, yeah. But क्या वो वजह enough है कि हम उसके बारे में लिखें ना? But how will our kids know about it? Correct. Right? Correct. They're not even traveling to those places. Correct. But हमारी एक जनरेशन है, विकी, agree or disagree, हमारी लास्ट जनरेशन है जिसने सब कुछ फिजिकली भी देखा हुआ है और डिजिटल भी हमने देखा। Exactly, दोनों एक्सपीरियंस किया है। हमने YouTube पता नहीं था कई चीज़ों के बारे में, राइट? तो नाउ टू यू विजिट ऑल द प्लेसेस ऑन YouTube and you know them. Exactly. हमारे टाइम में ना बुक्स थी, ना इंटरनेट था, ना कुछ था ऐसा। अब बच्चों के पास सिर्फ वो इंटरनेट वाला इंफॉर्मेशन है। True. But we want them to go out and explore, and we want them to cook from this. We want them to explore India from these eyes. कि look, and this is beyond India what is being written in the Western media. Right. So I also have to counterpart that and say that we understand what India, when they're studying in schools, what India they hear about from their classmates or their American friends or Caucasian friends. Yeah. There are layers of India, and this is just one of the layers we want them to explore. And of course, आपने इसका digital version भी है, physical and digital. You must tell me about this NFT which लोगों ने खरीदा है for $50,000 and this makes it the most expensive cookbook ever. मुझे नहीं पता वो। अभी तो थोड़ी देर पहले तो मेरे को बताया इन्होंने। Exactly, this just happened अभी recently, एक घंटे पहले। Yeah. तो मुझे नहीं पता कि सबसे ज़्यादा है, but definitely it's a big benchmark, क्योंकि इंडियन बुक के बारे में तो मैंने देखा नहीं था अभी तक कोई। अच्छा, आप पैक कर रहे, मुझे लगा आप मुझे दे। ऑथर तेरा है।
Nice. You know, I used to be a very shy guy before I came on MasterChef because I was happy just what I did. Correct. But MasterChef really is like being on the TV made you besharam. Exactly, yeah. And witty as well, you know, this is one quality which you've been... सीधा जवाब. सीधा अरे, जवाब, क्या? क्या किताब पे क्या करेगा? ऑथर ही दे रहा तू. भैया मैं ऑथर नहीं चाहिए, मुझे किताब चाहिए. But a message for everyone, you know, for all the youngsters, you know, watching you us right now, because social media पे हम तो जाए नहीं वाले हैं, दिखा नहीं वाले हैं, तो maximum consumption उनका उस पे होता है तो. I do feel that, you know, जो प्यार है ना, उसकी कोई भाषा नहीं है. वैसे ही भक्ति की कोई भाषा नहीं है. We need to find something जो हमारे को दोनों चीज़ें combine करती है. एक अपना जो जुनून है कोई चीज़ करने का, और साथ में stability comes from family. That's the only thing I tell you. Success comes and goes again and again. Family is the strong pillar. When you are in the high skies, everybody is your friend. But the moment you fall, you feel that the safety net is just the family. And that helps you to go up again and be stronger in the game. So when you're rising, don't forget to take them with you, because they are the only ones who will be waiting. Not waiting, they'll be only ones there for you when you fall. And that has been the truest and the most important lesson of my life. आज मैंने एक और टैलेंट डिस्कवर कर लिया है विकास खन्ना का, जो उन्होंने शायद नहीं डिस्कवर किया होगा. अपार्ट फ्रॉम ऑथर, अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकर, अपार्ट फ्रॉम मिशलिन स्टार शेफ, ही इज आल्सो अ लाइफ कोच. खुद लाइफ कोच कर लो अपना, बहुत है. थैंक यू. सच अ प्लेजर. हमेशा बहुत मजा आता है आपसे बात करके. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू सून इन दुबई.